गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Um, so first of all, I think I should apologize because I am completely non-academic person, and after hearing everyone speak, I am so conscious कि गलत जगह बुला लिया, गलत काम दे दिया. तो सबसे पहले मैं विनम्रतापूर्वक ये बताना चाहता हूँ कि इस अध्यापन के विषय पे न तो मैं अध्यापक हूँ न मैं अधिकारी हूँ. तो लेकिन पिता ज़रूर हूँ. वेरी सिमिलर टू सरिता जी, आई एम ऑल्सो पेरेंट. और इसी भावना से सोचता हूँ और खेल शिक्षा के विषयों पे के अंतर का संबंध जो है, जो जितना मैं समझ पाया हूँ वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ. तो कहीं पे अगर ऐसी कोई बात बोल दूं जिसका आधार नहीं हो, जो निराधार हो, तो उसके लिए क्षमा भी करें और मेरा मार्गदर्शन भी करें. ठीक है. सबसे पहले हम तो जब ये टॉक के बारे में सोच रहा था तो पेडागॉजी, हाउ डू वी टीच, उसके ऊपर मैंने सोचा कि एंशियंट बोर्ड गेम्स को मैं साथ में रखूं, पेडागॉजी एंड एंशियंट बोर्ड गेम्स. बट फिर मैं थोड़ा सा और सोचा तो लगा कि ये पेडागॉजी बड़ा अहंकारी शब्द हो गया. हमको पता है हम क्या करना चाहते हैं, और अगर ऐसा होता तो शायद दुनिया दूसरे तरह की होती. तो लगा कि नहीं, स्कॉलरशिप में भी अ बेटर अप्रोच, एंड दैट लेड मी टू थिंकिंग अबाउट पेडागॉजी वर्सेस स्कॉलरशिप. एंड आई when I was thinking about that, I understood pedagogy as a process of teaching, assessment and certification, जिसको हम अलग अलग तरह से मथते हैं. लेकिन अगर हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो हम एक्सपीरियंस, क्यूरियोसिटी, रिफ्लेक्शन एंड फाइनली लर्निंग आउटकम्स, इस तरह की बात करने लगते. और शायद भारतवर्ष के संदर्भ में स्कॉलरशिप इज़ अ मच मोर ईजिली associatable experience. We have probably been more scholarship oriented rather than pedagogy oriented people. नहीं जानता हूँ, I don't have academic आधार for this, but this is just the way I have experienced this. इसके बाद जो दूसरी बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ वो ये है कि कॉग्निशन एंड डिसीजन मेकिंग. तो हमारे जो विचार हैं वो न केवल हमको फिजियोलॉजिकली इम्पैक्ट करते हैं, वो हमारी डिसीजन मेकिंग और कॉग्निटिव स्किल्स को भी इम्पैक्ट करते हैं. हम जिस तरह सोचते हैं, हमारे माथे में जो थॉट्स डाले जाते हैं, दे ऑल इम्पैक्ट द वे वी टेक डिसीशंस. एंड इन दैट स्पेस आई थिंक गेम्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट modifier. So games require us to act, they require us to think, and they have objectives that empower our thoughts. तो हमको बताया जाता है ये करना है, तब उसी से हम उत्सुकतावश आगे बढ़ते हैं. और वो हमको बोलता है यार अभी तो करना पड़ेगा, तुम्हारा टर्न है, यू कांट से नो, राइट. सो यू आर मेड टू एक्ट एंड थिंग्स लाइक दैट. एक्सक्यूज मी. भारत में एक बहुत रिच गेमिंग ट्रेडिशन रहा है और उसके पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ये दोनों चीज़ों को मैं देखने की चेष्टा करूँगा. दी नेचर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ गेम्स ऑन आवर स्कॉलरशिप, इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा जोड़ने की चेष्टा करूँगा. ये कुछ कॉमन गेम्स हैं जो हम रोज़मर्रा खेलते हैं. क्रॉस एंड नॉट्स, बिजनेस, चेस, लूडो, एंड इन सब में आप अगर एक कॉमन सूत्र, एक कॉमन चीज़ देखना चाहें तो आपको क्या मिलेगा. तो अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे सोचें तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड एक्सपीरियंस, दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी हैड, that games are about. They are about an objective, how to play, and what is it that you end up experiencing. और उसमें जो पॉपुलर गेम्स हमने देखे, they are all play to win, they are competitive, and the experience is that of acquisition, right. तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्ले टू विन, हमारा अप्रोच होता है भाई कंपटीशन करना है किसी से, और एक्सपीरियंस होता है एक्विजिशन का. लेकिन अगर हम हमारे पुराने गेम्स को देखें तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव इज़ मोर डिस्कवरी ओरिएंटेड. अरे तेरे को ये पता था, ऐसा हुआ, अच्छा. एंड द अप्रोच इज़ एक्सचेंज. तो अगर आपकी गोटी किसी और के घर में पड़ती है तो आप उसको मार के नहीं निकालते हो, आप उसको एक्सचेंज कर लेते हो. एक बहुत ब्यूटीफुल कल थॉट आया जब प्रोफेसर जय कुमार प्रेजेंट कर रहे थे कि वो गाय ने जब बोला कि मेरे को जस्टिस चाहिए,
तो द किंग चोज टू एक्सचेंज हिज पोजिशन विद दैट ऑफ द काउ। बोले मैं भी अनुभव करूं कि तुमने क्या अनुभव किया। तो खेलों में कुछ इस तरह की बातें हमारे एंशिएंट बोर्ड गेम्स में हम एम्बेडेड पाते हैं। हम पाते हैं कि जब कोई लूडो में या सांप सीढ़ी में किसी और के घर में जाता है तो वो अपनी गोटी उसके साथ एक्सचेंज कर लेता है। ही डजेंट नेसेसरीली किल हिम एंड थ्रो हिम आउट से मेरे को और जोर से आगे बढ़ना है। एंड देन ऑफ कोर्स द एक्सपीरियंस ऑफ जॉय। सो वी विल try to look at these things a little more as we go forward. अब हम आ जाते हैं डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा सा। तो डिज़ाइन में ये जो हमने वर्ड्स यूज़ किए थे डिस्कवर, एक्सचेंज और जॉय, तो डिस्कवर हम कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो यूजुअली इन एंशिएंट बोर्ड गेम्स वी यूज़ वर्ड्स, रिलेशनशिप्स एंड चांस। तो व्हाट आर रिलेशनशिप्स? अगर हम कोई भी दो चीज़ को पास पास में रखते हैं तो एक तरह की एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो जाती है। ये दोनों करीब रखें तो पास पास के होंगे, कोई इनमें रिलेशनशिप होगा। और चांस भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। अगर आप डाइस यूज़ कर रहे हैं तो आपका चांस यूनिफॉर्म है, सब 1/6 है। लेकिन अगर आप कौड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं तो सब 1/6 नहीं है, प्रोबेबिलिटी दूसरी हो जाती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 और अ 4 इफ़ यू आर यूजिंग 7 coins or 7 कौड़ीज is probably more than trying to get a 5, 6 or a 7. So इस तरह की probability. So now if you are playing on a game board, the next cell is probably not as close to you as cell number 4 or cell number 3, depending upon the probabilistic condition. So the visual relationship and the experiential relationship is also something that we can modify by choosing the kind of dice we are going to be using to create the fullness of the experience. So words, relationships and chance, we kind of use all these three in the design of ancient board games to sort of provide an experience of discovery. जब भी आपको कुछ होता है, you kind of have to relate it to all these three to get a wholesome experience. Exchange जैसे मैंने कहा, कोलैबोरेशन भी होता है, डिस्कशन भी होता है। इसके बारे में जब मैं एक दो खेल और आगे दिखाऊंगा तो उसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और दीज आर गेम्स दैट वंस दे फिनिश यू ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट, अरे वहाँ पे ऐसा हुआ। Okay, so there is a sense of joy and there is a sense of reminiscence, and therefore there is possibly a sense of learning and growing. So these are the overall, instead of having the feeling of acquiring 20 gold coins or X number of properties on Monopoly, etc., the takeaway is a little different. Now if we really look at this, what are we talking about? Words, relationships, chance. अगर हम इन सब को थोड़ा सा और ऊपर से देखें तो are we talking about hashtags? Are we talking about possibly mind maps? These are all 21st century, infographics. These are all things that we are very, very aware of and quite well accept in our current context, right? तो हम ये जो बातें कर रहे हैं, words, relationship and chance, ये शायद ancient board games में दिखती हों, लेकिन ये हमको आज के दिन तो अनकंफर्टेबल नहीं करते। 10 साल पहले शायद हम इसको थोड़ा सा खुरेत रहे हों कि यार ये हैशटैग्स क्या होता है, माइंड मैप्स क्या होता है। बट टुडे दीज हैव ऑलमोस्ट बिकम अ स्टैंडर्ड इन आवर मेन स्ट्रीम कम्युनिकेशन एज मेन स्ट्रीम कम्युनिकेशन टूल्स। सो एंशियंट बोर्ड गेम डिज़ाइंस आर नो मोर वेरी वेरी डिफरेंट, और इनके पहुंचने के लिए एक एजुकेशन पॉलिसी चाहिए, ऐसा नहीं है। सो वी आर सॉर्ट ऑफ वेरी वेल बैलेंस्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। जब हम एक्सचेंज, कोलैबोरेशन और डिस्कशन की बात करते हैं तो नॉन कम्पिटिटिवनेस एंड टीम वर्क की बात करते हैं, जो एक और एस्पिरेशनल नीड है हमारे आज के समाज की। और जब हम जॉय, रेमिनिसेंस, लर्न एंड ग्रो की बात करते हैं तो हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बिकॉज एक्विजिशन इज़ सर्टेनली नॉट सस्टेनेबल। तो आज के दिन में 21st सेंचुरी में हम जो, अगर मैं इधर का पूरा ढक दूँ तो hashtags, mind maps, teamwork and sustainability would be clear educational goals even in today's context. So I sort of tried to show that we started off and we came back both to the current context, except that we took the path of ancient board games. So it's not that difficult to sort of embed even within our modern day communication programs. Now, let me just
Anybody? Koi kuch bola? No. Okay. So let me just give you an example of infographics, mind maps, hashtags, and everything that we have just spoken about in this slide, right? So this is an ancient snakes and ladders board game. What you see here is snakes and ropes, right? है ना? So the first question was, why are there not ladders and why are there ropes? And ladders give you a sense of shortcuts. इसको मिल जाएगा तो वहाँ पहुँच जाएंगे. Reality में होता नहीं है. And ropes और snakes का एक बहुत सुंदर relationship है. हमारे यहाँ बोला गया है कि रज्जू मतलब डोरी या सांप तब तक पता नहीं चलता जब तक उस पर लाइट नहीं गिरे. Unless there is the light of knowledge, you really don't know whether it's a snake or a ladder. And actually, if you look at the cells, trying to understand whether it's a snake and a ladder is a matter of perspective. Whether Kusangati is giving you Abhiman, which is basically 24/7, is really depending upon how you perceive Sangati. If somebody is patting you on your back and saying you're a good boy, there's a very, very, you really, really need to think whether he's praising you in an appropriate context or, that's a compliment that you well deserve. So my point is that it's very difficult to really discern whether the experience correlated in two cells are a snake or they are just another dory, a ladder through which you can go to another place. The adjacency matrices are very beautiful. You have the spinal cord in the middle. You have a structure of 8 by 9, which is your 8 compartments and your 9 windows. It's the human body. On the left-hand side, you have the Brahmalok, Tamogun, Rajogun, the 3 gunas. And then you have the Mahat or the Ahankara, and then the Panch Tattva, and then Pran, and then the Gyanendriya. So this whole left-hand side is the physical body. The right-hand side, on the other hand, is the metaphysical self. The first 18 cells are Brahmacharya, then Grihastha, then Vanaprastha. So you have your Brahmacharya starting from Janma and going all the way to the thrill of youth, Abhimanyu. He is ready to go to battle knowing that he will never come back. A 25-year-old or a 30-year-old would not do that, right? It's only an 18 or a 19-year-old who would have that kind of energy. And then you have the Grihastha that starts from Karma Yoga and goes up to Spashta Chetna, or the right vibration. And then on the extreme right, you also see how they are tempered. So if you are in the Brahmacharya, starting from Janma, you are really working with Kam and Tapasya and going towards Harsha. I don't know if everyone can make out everything I'm saying, but we can always take questions later in the paucity of time. But all I'm trying to say here is that there are many, many beautiful relationships that are embedded within the design of this game board itself, and a lot of experiences therefore that are embedded within secretly for each player to land on an experience. Now, can we do this? Can we do this for everything? Is it possible to say, extrapolate this idea and say that if I had a book of physics, I could do hashtags and I could create adjacency matrices instead of having a table of contents, which is giving me a more sequential narrative. So that's just a thought. But and it is possibly the direction of what I think we should be doing, at least in the minimum bit, with our textbooks as we go forward. I will share with you another very interesting game. It's called the Golok Dham. Instead of having words which are representative of certain narratives, we have places which also have folk tales associated to them. And here, because this game is played with kaudis, you have a very, very different kind of adjacency matrix, which is non-visual. So the cells that are next to each other are really not close to each other because you cannot land on them that easily. But cells that are 2 or 3 places away are actually adjacent to you or closer to you because of the probability that is coming out of using kaudis, or I would say just coins, flipping coins and things like that. And I will sort of, I hope I'm okay on time. 5 minutes, okay.
this is probably my last slide anyway, so I'm good. I'll try to close this talk of mine with an example of a game that we built now with all these basic elements in place. It's a game on Delhi, and what you see is that you have a spiral starting from 1, and the different colors are the colors of the cities of Delhi. So you have each city of Delhi painted in a particular color. So when you look at Mehrauli and you see it's being, it's where we started from, and even as late as 53, you have something happening there. So it's a very, very vibrant, place which has existed for a long period of time. But very interestingly, what we wanted to do here was that we wanted to ask you a question. So for example, if you land on the first cell, the iron pillar, now the iron pillar has a narrative of people trying to hug it, people trying to, be one with it. At the same time, it also has the narrative of the throne of Delhi shaking in case the pillar itself shakes. So suppose when you land on it, the card that you pick up, it asks you, what is your marmasthala? What is it that would shake you? What is it that you would love? Similarly, if you come to Suraj Kund, which is the water reservoir, if the question was, aprapya ki prapti, what is it that you don't have but you desire? Delhi has always wanted water. So what is it that you would want? Similarly, if you come to Lal Kot, which is the fortification, and I asked you, prapya ka sanrakshan, how would you fortify your assets? How would you protect your assets? Or if we are talking about Agrasen ki Baoli, which has the narrative of dark waters, black waters that make you go crazy, you want to stay away. So, aapke liye hai kya hai? What is it that you don't like or you should stay away from? So, we start talking about Atma Brahman along with Bahiri Brahman. So, that sort of gives you the incredibleness of India, because India is one country which tells you everything that is without is within. So if we can ask the right questions, then maybe we can start connecting history, narratives, very personally to the people themselves, leading possibly to the path of self-discovery as well. So this is how we are trying to say that games can be learn, grow, joy, collaboration, discussion, travel, integrate everything into one. And that's a small presentation. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat. Thank you so much, Amanji. Our kids live in the games. They don't play the games. They live in the games in the I'm sure it's here. The video games have taken over the world. And I have kids that play the game till 4 o'clock in the morning, and they have to come to school at 7:30. And all they do is sleep through the day and play the game through the night. So I wish you actually can make these games digital. Yeah, they are? Okay. So you need to give it to me. I'll promote it to them. I'm telling you, any game is okay for my kids as long as they can play. If you look at his face and the joy in it, and you can find why he does this,